Welcome students. Today our topic on SPC in Quality Improvement Program. SPC seem to be collection of statistical based problem solving tools. SPC full form means is statistical process control. There is more to success use of SPC than learning and using this tool. SPC is most effectively when it is integrated into an overall company-wide quality improvement program. It can be implemented using DMAIC approach. Indeed, the basic SPC tool are an integral part of DMAIC. Management, involvement, and commitment to quality improvement process are the most vital component of SPC potential access. Management is a role model, and the other in the organization look to management for guidance and as an example. A team approach is also important as it is usually difficult for one person alone to introduce process improvement. Many of the magnificent seven are helpful in building an improvement team, including cause and effect diagram, Pareto charts, and defect concentration diagram. This team approach also fit well with DMAIC. The basic SPC problem solving tool must become widely known and widely used throughout the organization. Ongoing education of personnel about SPC and other methods for reducing variability are necessary to achieve this widespread knowledge of the tool. The objective of SPC based variable reduction program is continuous improvement on a weekly, quarterly, or annual basis. SPC is not a one-time program to be applied when the business is interval and later abandoned. Quality improvement that is focused on reduction of the variability must become part of culture of the organization. तो ये जो SPC प्रोग्राम है ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हमको जब ज़रूरत होगी तभी हम यूज़ करेंगे, बाकी टाइम इसको छोड़ देंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंपनी के अंदर वेरिएबिलिटी जो हमारे प्रोडक्ट में आ रही है उसको कंटिन्यू दूर करते रहेंगे। ये कभी नहीं रुकने वाला एक प्रोसेस है। इसके अगर हम कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहला होता है इसके सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट लीडरशिप, यानी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अ टीम अप्रोच फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। हमारे पास जो एम्प्लॉय होंगे उन एम्प्लॉय को हम पहले क्या करेंगे, हमारे जो भी प्रोसेस हो रहा है उससे रिलेटेड उनको एजुकेटेड किया जाएगा। एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी, measuring success in quantitative economic term, a mechanism of communication successful result throughout the organization, an application of SPC. In this section we give an account of how SPC method were used to improve quality and productivity in copper plating operation at a printed circuit board fabrication facility. This process was characterized by a high level of defects such as brittle copper and copper voids by long cycle time. The long cycle time was particularly troublesome as it had led to an extensive work backlog and was a major contributor to poor conformance to the factory production schedule. Management chose this process area of initial implementation of SPC. The DMAIC approach was used. An improvement team was formed. Consist of the plating tank operation, the manufacturing engineer responsible for the process, and quality engineer. All members of the team had been exposed to DMC and the Magnificent Seven in the company sponsor seminar. During the defined step, it was decided to
concentrate on reducing the flow time through the process, as the missed delivery target were considered to be the most serious obstacle to improving productivity. The team quickly determined during the measuring step. This is the sum step used in controlling or reduce the variability of product. Okay, as you see in this figure, resenting replenishment, periodically pump failure, concentration variation, electric failure, plate out recirculating system, temperature controller, oxygen controller, tubing maintenance, electrode replacement, alarm system failure, recirculating pump failure, and then control downtime. तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनको हम कंट्रोल करेंगे बाय द यूज ऑफ एसपीसी, स्टैटिक प्रोसेस कंट्रोल. This is a cost effective diagram of controller downtime. Okay, next is process capability analysis. Process capability analysis is a vital part of overall quality improvement program. Among the major use of data from process capability analysis are the following. तो ये कुछ हमारे पास डेटा है जिसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले आता है प्रिडिक्टिंग हाउ वेल द प्रोसेस विल होल्ड द टॉलरेंस. यानी हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारी टॉलरेंस लिमिट है उनको हम प्रिडिक्ट करेंगे कि वो कितने अच्छे से टॉलरेंस लिमिट को होल्ड कर रहा है. जैसे कि अगर टॉलरेंस की बात करें, कोई हमारे पास डायमीटर है 60 ± 5 mm. तो ये जो ±5 mm है, ये हमारी टॉलरेंस लिमिट हो जाती है. नेक्स्ट इज असिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपर डिज़ाइनर इन सेलेक्टिंग और मॉडिफाइंग ए प्रोसेस. अब जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसको डेवलप करना, उसके डिज़ाइन को चेंज करना, मॉडिफाई करना, तो उसके लिए मॉडिफाइंग के लिए हम प्रोसेस का यूज़ करेंगे. सेकंड, थर्ड, असिस्टिंग इन एस्टेब्लिशिंग एन इंटरवल बिटवीन सैम्पलिंग फॉर प्रोसेस मॉनिटरिंग. अब जो भी प्रोसेस हो रहा है कुछ हर एक इंटरवल टाइम बाद हम क्या करेंगे, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोसेस के बाद उसकी हम सैम्पलिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इस स्पेसिफाइंग परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इक्विपमेंट. फिर जो भी हमको अदर प्रोसेस करना है तो उसके लिए कौन रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा नया इक्विपमेंट हमको ज़रूरी है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट फिनिशिंग है वो भी अच्छी होगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू इक्विपमेंट को खरीदेंगे या परचेज करेंगे. सेलेक्टिंग बिटवीन कंपीटिंग सप्लायर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब हम क्या करेंगे, मार्केट में जितने भी सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल या फिर जो भी कंपोनेंट हमको चाहिए हमारे प्रोडक्शन के लिए, वो सप्लाई करने वालों के कंपटीशन देखेंगे कौन हमको अच्छी रेट में अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है. नेक्स्ट, प्लानिंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस when there is a interactive effect of process on tolerance. Next, reducing the variability in the process. The third primary technique are used in the process capability analysis: histogram, probability plot, control chart, or design experiment. First is using histogram. Histogram can be helpful in estimating process capability. Alternatively, a stem and leaf plot may be substitute for the histogram. At least 100 or more observations should be available for the histogram to be moderately stable, so that reasonably reliable estimate of process capability may be obtained. If the quality engineer has access to process and can control the data collection effort, the following step will be followed period to data collection. Choose the machine or machine to be used. फर्स्ट इसके अंदर जो स्टेप आता है, तो हमको क्या करना है, चूज द मशीन और मशीन्स टू बी यूज. हमको वो मशीन चूज करनी है जो हमारे प्रोसेस के काम में आ रही है.
Machine are to be extended to a larger population of machine. The machine selected should be representative of those in population. Furthermore, if the machine has multiple workstation or head, it may be important to collect the data so that head-to-head variability can be isolated. This may imply that design experiments should be used. Next is selecting the process operation condition. जिस कंडीशन में ये ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कटिंग स्पीड, फीडिंग रेट एंड टेम्परेचर, फॉर फ्यूचर रेफरेंस इट मे बी इम्पोर्टेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरिंग दिस फैक्टर ऑन द प्रोसेस कैपेबिलिटी. Select a representative operator. In some study, it may be important to estimate operator variability. In this case, the operator should be selected at random from the population of operator. Carefully monitor the data collection process and record the time order in which each unit is produced. The histogram along with the sample average and sample standard deviations provide information about process capability. This is the some question. Probability plotting. Probability plotting is an alternative to the histogram that can be used to determine shape, center, and spread of distribution. It has the advantage that it is unnecessary to divide the range of the variable into class interval, and it often produces reasonable result for moderate small samples, which is the histogram will not. Generally, a probability plot is a graph of the rank data versus the sample cumulative frequency on special paper with a vertical scale chosen so that cumulative distribution of the assumption type is straight line. This is probability plotting.